Hello, my dear students of Growing Soul Kids Gurukul. Hope you all are doing well and safe at your home. My dear students, as we all know, it's time for our studies. So, all of you get ready. Our today's schedule, Class 4, Subject English, Lesson 1, Words and Sentences, Part 2, Subject and Predicate. Very good morning to all my dear students of class 4th. How are you all? Good, very good. So students, in our previous video, we discussed about our topic suffix and prefix and homophones, chapter 1st of English grammar. Yes, na? Yes. So today we will discuss about the same chapter but another topic. And second topic is? Yes, second topic is subject and predicates. So today we will discuss about subject and predicate and do the exercise of that related topic. Okay, so let's start. So students, our today's topic is subject and predicate. Okay, so let's start. Basically students, a complete sentence has three parts. It is divided into three parts. So what are these three parts? First one is subject, predicate and object. A simple sentence is divided into three parts, subject, predicate and object. So आज हम जानते हैं कि कैसे हम differentiate कर सकते हैं that what is subject, what is predicate and what is an object. Okay? So let's see. First one is subject. What is a subject? Subject tells us what or who the sentence about. यानी एक सेंटेंस में जो भी कोई काम कर रहा है या जिसके लिए कोई काम हो रहा है दैट इज अ सब्जेक्ट. ओके, टेल्स अस व्हाट और हु द सेंटेंस अबाउट. गेटिंग? ओके. नाउ प्रेडिकेट. व्हाट इज अ प्रेडिकेट? टेल्स अस अबाउट व्हाट द सेंटेंस डज. मीन्स एक सेंटेंस में कोई जो भी सब्जेक्ट के द्वारा कार्य किया जा रहा है, जो भी एक्शन किया जा रहा है, वो एक्शन क्या है, दैट इज अ प्रेडिकेट. प्रेडिकेट टेल्स अस व्हाट द सब्जेक्ट डज. यानी आपका जो सब्जेक्ट है एक सेंटेंस में वो क्या कर रहा है, उसके द्वारा क्या काम हो रहा है, दैट इज अ प्रेडिकेट. ओके. नाउ ऑब्जेक्ट. व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट? दे रिसीव एन एक्शन. मीन्स इंस्टेड ऑफ डूइंग एनी एक्शन. इन प्रेडिकेट में कोई काम हो रहा था, एक्शन हो रहा था, यस ना. बट इन ऑब्जेक्ट, इन दिस केस, दे डोंट डू एनी एक्शन, दे रिसीव एन एक्शन. मीन्स जब भी कोई प्रेडिकेट में जो भी कोई काम हो रहा है वो ऑब्जेक्ट के थ्रू हो रहा है, दैट इज एन ऑब्जेक्ट. क्लियर? लेट्स सी अगेन. सब्जेक्ट. व्हाट इज एन सब्जेक्ट? सब्जेक्ट इज अ subject tells us what or who the sentence about. Okay. Predicate tells us about what the subject does. Clear? Object, they receive an action. Okay. So let's take some examples to make it more clear. Okay. So here your first example is Ruhi ate the cake. Ruhi ate the cake. So let's see. Tells us what or who the sentence about. So tell me, in this sentence is about to. किसके लिए है ये sentence? Yes, रूही. ये sentence किसके लिए है? रूही. So रूही is a subject. रूही is a subject here. Clear? And what is predicate? Tells us what the subject does. यानी subject क्या कर रहा है. So who is subject? Subject is Ruhi. And what is she doing? She is ate the cake. She is ate the cake. So ate the cake is a predicate. Yes. But what is object? Object क्या है? Yes. Look students, Ruhi is doing some work. Ruhi is doing some work and what is she doing? She is ate the cake. Ruhi ate the cake but इनडायरेक्टली रूही का जो एक्शन है उससे किसको इफेक्ट हो रहा है? केक को. किसको इफेक्ट हो रहा है? केक को. सो अगर केक को इफेक्ट हो रहा है तो केक इज अ ऑब्जेक्ट हियर. केक इज अ object here. Okay students?
Clear now that what is subject, what is predicate and what is an object. Okay. So let's take one more example. Raj is playing badminton. Raj badminton खेल रहा है. So what is the subject in this sentence? Tell me fast. Raj is playing badminton. Who is the subject here? Yes, Raj subject here because Raj is the person who is doing some work or who is playing. So Raj is subject here. Okay. And what is predicate in this sentence? The subject does. Subject क्या कर रहा है? Is playing badminton. So this is our predicate. ये हो गया हमारा predicate. और राज जो एक्शन कर रहा है उससे किसको इफेक्ट हो रहा है? यस, बैडमिंटन को. इनडायरेक्टली बैडमिंटन इफेक्ट हो रहा है. सो बैडमिंटन इज आवर ऑब्जेक्ट हियर. ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है इतना? सो दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ सब्जेक्ट, प्रेडिकेट एंड ऑब्जेक्ट. नाउ वी विल डू द डेफिनेशन ऑफ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट्स. सो टेक आउट योर notebooks fast. We will do the definition. So students, are you ready for writing definitions? Yes. So first definition is about subject. Okay. The part of a sentence which talks about the person or a thing we are referring to. Means एक सेंटेंस का ऐसा पार्ट जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, चाहे वो पर्सन हो या वो थिंग हो. ओके. हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं दैट इज अ सब्जेक्ट. ओके. सब्जेक्ट, द पार्ट ऑफ अ सेंटेंस विच टॉक अबाउट द पर्सन और अ थिंग वी आर रेफरिंग टू. क्लियर? सेकेंड वन इज प्रेडिकेट. द पार्ट ऑफ अ सेंटेंस विच टेल्स अस समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट. मीन्स जो आपने अभी ऊपर सब्जेक्ट की डेफिनेशन लिखी है उसके बारे में जब कोई सेंटेंस बताता है, सो दैट इज अ predicate. The part of a sentence which tells us something about the subject. Okay. Example, monkeys are eating mangoes. Monkeys are eating mangoes. So किसके बारे में बात हो रही है in this sentence? Yes, monkeys subject and are eating mangoes is predicate. Clear? Second example is Renu is flying a kite. रेनू एक पतंग उड़ा रही है. सो व्हाट इज अ सब्जेक्ट? रेनू इज अ सब्जेक्ट एंड इज फ्लाइंग अ काइट इज अ प्रेडिकेट. ओके स्टूडेंट्स, सो राइट द बोथ ऑफ द डेफिनेशन इन योर नोटबुक इन वेरी नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग. ओके. आफ्टर दैट वी विल डू द बुक एक्सरसाइज. सो स्टूडेंट, टेक आउट योर इंग्लिश ग्रामर बुक, पेज नंबर 6. And we will do the book exercise of subject and predicate topic. Okay. So let's start. First of all, as you can see on page number 6, first exercise is fill in the blanks with suitable subject and predicate. Here are some help box for you. आपको ये help box मिला हुआ है. इसकी help से आपको this exercise, ये exercise को fill करना है. Okay. And exercise E is Make 5 sentences with given subject and appropriate predicate. आपको यहाँ पर subjects दिए हुए हैं, इनसे relate करके आपको एक complete sentence means with subject and predicate both आपको एक पूरा sentence तैयार करना है. Okay, so let's start. So student, as you can see, first sentence is jumped in the sea. So what jumped in the sea? A grey dolphin. Okay. B is checked my vision. So who checks my vision? The optician. Okay, clear? C is the spider. What is the spider doing? The spider is spinning a web. D is dash was happy when I finished my homework. So who was happy? My mother. E, the plumber. The plumber fixed the sink. Okay. F, the pilot. The pilot flew the aeroplane. Okay. Now G, dash is collecting nectar from flowers. Who is collecting nectar from flowers? A buzzing
B. Okay. H. The little girl. What is the little girl doing? The little girl is eating ice cream. Okay. So this is exercise D. Now exercise E. Make 5 sentences with the given subject and appropriate predicate. Okay. First one is the school. So here we have subject. हमारे पास पहले से ही subject है the school. उसके बाद हमें predicate add करना है. So we can write is far from my home. The school is far from my home. Okay. B. My bike. My bike is very expensive. Okay. The pen is also a subject and we have to write the predicate. So the pen is in the pen holder. Okay. D is my bag. My bag is full of notebooks. मेरे बैग में बहुत सारी notebooks हैं या मेरा बैग notebook से भरा हुआ है. E. My friends. My friends are playing outside. So students, these are your sentence. But बेटा let me tell you one thing, you can change these sentences also. ज़रूरी नहीं है कि आप यही करें. आप कोई भी predicate, suitable predicate आप अपने subjects में add कर सकते हैं. Okay? So this is your book exercise of subject and predicate and your next topic is punctuation. But student, punctuation आप लोगों को बहुत अच्छे से आती है. आपने अपनी previous classes में punctuation सीखी है. So this exercise punctuation, page number 8, this is your homework बेटा. Okay? So you have to do it yourself. Okay? आपको ये work अपने आप करना है punctuation. Till then, goodbye and take care बेटा. My dear students, hope you enjoyed the class and now it's time to complete our work. Dear students, complete your video class work in your English language book in very proper handwriting. Okay, my dear students, see you in the next class with some interesting topic. Till then, take care, stay at home. God bless you.